सभी क्लास अभी स्टार्ट हुआ है बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग আমি মানে আজি তিনিটা প্ৰপাৰ্টি ডিসকাস কৰিম হা বক্স সাইজিং ফন্ট ফ্যামিলি এন্ড রিলেটিভ ইউনিটস EM and REM box sizing is a property that is used to adjust the width and height of the element okay padding देने से और border देने से कैसे width और height को adjust करना है उसके related है property we have no border suppose or maybe I comment this border and padding is also 0 so when I give this width value you can see exactly element का width कितना है अभी 150 pixels है okay check this carefully the width of the element is 150 pixels now when I add some padding 30 pixels or 20 pixels or say 15 pixels when I add padding 15 pixels तो element क्या हो गया देखो element okay 1 minute box sizing already is in place look without box sizing इसका width है 150 pixels when I add this padding I uncomment this 15 pixel का padding you can see the element became larger can you see this Vipul can you see the difference hello Hello. yeah can you see that the element became larger on adding padding look if I Can comment you? this Oh, yeah. Okay. if I comment this padding the element becomes smaller if I uncomment this Yes. the element becomes larger have you understood why it Yes. is happening Yeah, because padding is like the yeah space it's being between added yes it's being added under yes the borders. yeah Okay. yes under the boundary of the element yes so you can clearly see the padding whenever you add the padding or whenever you increase the padding value the element size increases okay so by default you can ask এই তো গ্রিড সিস্টেম এই তো বস্তুটো অলপ দিগদাৰ দিয়ে ন এইটো পেডিং তোমাৰ কিবা পেডিং এড দিলে কৰিলে এলিমেন্ট ডাইমেনশনটো ডাঙৰ হৈ যায় সো ইটস ভেৰি হাৰ্ড টু এডজাষ্ট এলিমেন্টৰ উইথটো এডজাষ্ট কৰাটো হাৰ্ড হৈ যায় সো সেইটোৱে সলিউশনটো আজি আমি দি আছো তাৰে আজি সলিউশনটো পাই যাবা হা সিমিলাৰলি আকৌ চাবা whenever I হৃদয় মিউট কৰাচোন মাইকটো কি মানে ক হা okay someone okay so whenever we also add some border like 10 pixel border इधर सबा एलिमेंट साइज becomes larger again okay मतलब बॉर्डर फिर से ऐड हो जाता है बॉर्डर का जितना भी डायमेंशन है एलिमेंट का विथ में ऐड हो जाता है एलिमेंट का विथ था 150 पिक्सल मैंने पैडिंग कुछ ऐड किया एलिमेंट साइज बढ़ गया फिर से बॉर्डर ऐड किया एलिमेंट का साइज फिर से बढ़ गया तो इट बिकम्स हार्ड टू एग्जैक्टली फाइंड आउट द वैल्यू ओके द एग्जैक्ट विथ जितना हम लोग को एग्जैक्ट विथ चाहिए वो निकालना हार्ड हो जाता है बेसिकली जब हम लोग का जैसे हृदय ने बोला ग्रिड सिस्टम में इशू आ सकता है या फिर किसी पेरेंट एलिमेंट के अंदर होगा तभी भी इशू आ सकता है so this can be a problem okay so to deal with this problem we have the property called box hyphen sizing this property we have to discuss let me just quickly show you what was happening Vipul you can look carefully if you have bad network this was the original dimension okay Okay. yes this was around 150 pixels it applies for height and width both this is 150 pixels 150 and as soon as we added this 15 pixel padding it increased by 15 pixels on the left and also 15 pixels on the right as well as on the top and bottom also okay तो अभी एलिमेंट का Okay. टोटल वेट कितना And हो गया I think हाँ तो दिस so मच here we can use that thing, right? Like one few sessions before you were saying you could put multiple variables and change no like no borders or things, right? you check this first wait तो यू कैन सी पैडिंग हम लोग जब देते हैं तो एलिमेंट का 15 पिक्सल सपोज वी एडेड 15 पिक्सल पैडिंग तो लेफ्ट साइड 15 पिक्सल और 15 पिक्सल हम लोग का ऐड होके हो गया 150 प्लस 15 30 कितना हो गया 180 ओके अभी एलिमेंट का टोटल विथ हो गया 180 पिक्सल्स आफ्टर दैट व्हाट वी डिड हम लोग ने और बॉर्डर ऐड कर दिया राइट वी एडेड बॉर्डर 10 पिक्सल्स बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन तो बेसिकली लेफ्ट साइड में 10 पिक्सल बॉर्डर ऐड हो गया फिर राइट साइड में भी 10 पिक्सल बॉर्डर ऐड हो गया तो अभी टोटल कितना हो गया Okay. हाँ 180 प्लस 20 लेफ्ट साइड 10 राइट साइड 10 तो अभी टोटल हो गया 200 पिक्सल तो हम लोग का ओरिजिनल भी था 150 पिक्सल्स फिर पैडिंग लगाया बॉर्डर लगाया उसके बाद टोटल कितना हो गया 200 पिक्सल्स सो दिस कैन बी एन इशू whenever you have this element as Hriday said if it's inside grid system or some header you can have a hard time adjusting these layouts if you don't know how to deal with this problem okay so that's why we have a nice property provided by CSS if you don't want this kind of behavior that padding add होने में expand नहीं होना चाहिए element को then you have to add this box sizing property
ओके, बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होता है कंटेंट बॉक्स. ओके, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू कंटेंट बॉक्स. कंटेंट बॉक्स मीन्स ये जो कंटेंट है ना, div का कंटेंट, कंटेंट मीन्स समथिंग विच इज इनसाइड दैट थिंग, राइट? So this is the content. This is text content, image content. It can be anything. So that the stuff that is inside that element is called content. So whenever you add this box sizing content box, which is the default value by the way, so nothing will happen. If I reload and show you, nothing happens on adding box sizing border box. Sorry, content box, box sizing content box, because इसका content का width को समझाता है. Whatever width we are adding or whatever height we are adding, this is the width and height of the content box. Okay, ये जो content का box है ना, content का box. So this content, okay, इसका you can imagine this is the box of the content which contains the content. ठीक है, तो content box का width 150 पिक्सल है. So when we add padding, that's why it comes extra. Okay, extra आ जाता है because इसका content का width को हम लोग ने define किया है. Only content का width 150 and height 100 पिक्सल हो सकते हैं. So that's what it means. And any other values, they will come extra. So total width and height becomes larger than expected. If you don't want this, you can use border box. Box sizing border box. Instead of content box, which is the default value, you have to specify box sizing colon border hyphen box. So when you specify box sizing border box, तो क्या होगा? तो ये जो एलिमेंट है ना, इसका टोटल विथ मेंटेन होगा इस बार. ओके, तो इस बार क्या होगा, इसका जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स मतलब ये जो बॉर्डर का बॉक्स है, दिस बॉर्डर बॉक्स, ये जो बॉर्डर का बॉक्स है ना, अभी इसको समझाएगा. ये जो 150 पिक्सल है, ये अभी कंटेंट का विथ को नहीं समझाएगा. दिस विल नाउ टेल द विथ ऑफ द बॉर्डर. ओके, this will now define the width of the border. Now let us see what happens as soon as I add this border box. What will happen? You see that it becomes smaller. Okay, छोटा हो गया. Let me remove this content. ये overflow हो रहा है. And as you know, overflow को handle करने के लिए भी हम लोग का overflow property रहता है. Overflow hidden, overflow visible, which is by default. Overflow scroll. Okay. So don't think for that for now. But अभी देखो, as soon as I gave this border box sizing border box, अभी विथ 150 पिक्सल जो है ना, इसका टोटल विथ 150 पिक्सल हो गया अभी. हाँ, टोटल विथ. नो मैटर हाउ मच बॉर्डर वी ऐड, नो मैटर हाउ मच पैडिंग वी ऐड, द टोटल विथ ऑफ द एलिमेंट विल ऑलवेज बी 150 पिक्सल एंड द टोटल हाइट विल ऑलवेज बी 100 पिक्सल. डोंट थिंक ये ओनली विथ के लिए अप्लाई होता है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ विथ. इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर हाइट. ओके, now if I increase or decrease the padding, or if I increase or decrease the border, let me decrease the border, let me make the border 4 pixel, you can see the element is still the same height, it is still consistent. इसका width अभी भी 150 पिक्सल है. नो मैटर आई मेक बॉर्डर 24 पिक्सल्स. देखो, एलिमेंट ओवरफ्लो तो हो गया है, ओवरफ्लो हो गया, बट यू कैन सी द डिमेंशन ऑफ द एलिमेंट इज स्टिल बीइंग मेंटेन्ड. ओके, सो if I make it 14 like this, if I decrease the padding to 5 pixels, देखो, or if I increase the padding, nothing will happen. Huh? The element size, the dimension will be exactly what you specify here. Whether you specify 170 pixels, whether you specify height of 120 pixels, it will exactly remain the same no matter whatever border you add, whatever padding you add. Okay, so that's the only difference. You have to know this. Huh? Box sizing property, border box. This is very important. Content box is not that important because by default content box होता ही है. ठीक है. If you add box sizing border box, then it will adjust itself. मतलब जो भी बॉर्डर आएगा, जो भी पैडिंग आएगा ना, वो एक्स्ट्रा नहीं आएगा. ओके, इट विल नॉट इंक्रीज द डिमेंशन ऑफ द एलिमेंट. ठीक है, तो प्रश्न को समझ में आया ये, दिस वन? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. ओके, पीपल अंडरस्टूड. विद्या बुझी पाला दिस वन? Good also. देयर आर लॉट्स ऑफ डायग्राम्स है, इसमें बहुत सारा डायग्राम भी है जो एक्सप्लेन करता है. यू कैन इजीली चेक आउट. एग्जांपल दिस डायग्राम, इसको भी मैं सेव करके देता हूँ. প্ৰপাৰ্টি এটাই ভেলিউ আছে নেকি, মানে দুটাই আছে নেকি? দুটাই আছে. ইয়েস, ইয়েস. এটাতো এটাটো বৰ্ডাৰ বক্স, এটাটো কন্টেন্ট বক্স, দুটাই ভ্যালু আছে. These are the only two values. তো এইটোৱে ইয়াতে এক্সাম্পলো দিছে কি লাইক দিস. सो যেতিয়া তোমালোকে এইটো কন্টেন্ট বক্স ইউজ करा बाय डिफॉल्ट इटू থাকে, तो इट एक्सपेंड्स द वैल्यू. ओके, एक्सपेंड हो जाता है एलिमेंट. असाइन विथ, जो भी विथ असाइन किया है 150 पिक्सल 200 पिक्सल, इसका कंटेंट एरिया उस असाइंड वैल्यू का विथ या डायमेंशन में सेम रहता है. लेकिन पैडिंग देने से एक्सपैंड हो जाता है और बॉर्डर देने से और बड़ा हो जाता है एलिमेंट. बट व्हेन यू यूज बॉर्डर बॉक्स, ये कंट्रैक्ट होता है, छोटा होता है. अगर तुम बॉर्डर करोगे ऐड या फिर पैडिंग ऐड करोगे तो इसका कंटेंट एरिया डिक्रीज होता है.
लेकिन इन केस ऑफ कंटेंट बॉक्स कंटेंट एरिया सेम रहता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. तो let me add this image also. Insert image. uh, huh. Font family we'll have to skip for today actually. We will skip, and then we will discuss relative units EM and REM. I may not be available from tomorrow till Sunday. Directly Monday से होगा शायद, because I'll be going to village. That's why. So EM and REM. Now say EM and REM हम लोग ने already discuss नहीं किया है. पहले हम लोग ने बोला था that we will discuss for later. So today is the time to discuss this relative units EM and REM. This is very important for responsive font sizing. Okay, responsive font sizing. So it is used for responsive font sizing. जब तुम लोग font size को responsive करना चाहते हो, okay. So what does it mean? We'll just say it is used for responsive font sizing. Okay, basically when we want the child font size to adjust itself based on parent font size. So this REM is there and EM is there. Okay, REM and EM. I don't know the full form. You can check it. It is some weird name. I have not memorized it. So we just say EM and REM. Okay, you can say RAM and M also. So this RAMs, in RAM also you can specify this font size, and in EM also this one. I say EM basically. RAM. So this RAM is not used so much, but EM is used a lot. Okay, RAM is rarely used, but EM is used a lot. I also mentioned this. Let me 1 minute. हाँ, ठीक है. Relative units M and REM. So इसको discuss करना है. Let me go back here. Either div element. So inside this I will create one more element. Maybe some button element or p tag, any element. Click me. ठीक है. Inside this we can add some p tag. So this is suppose product description. EM is very important because we use EM all the time whenever we want to create or whenever we want to use font size. Font size को ना EM में ज़्यादातर use होता है. It's used for responsive font sizing. So this unit is used mostly with font size property. That's it. So with font size property, this is mostly used. Okay. So now इसको हम लोग font size में use करते हैं जो कि so we have to use the font size property now. So font size properties is to adjust the size of the font. ठीक है. So it is overflowing right now. You can see. Why is it overflowing? Because हम लोग ने width और height को fix कर दिया है. So we can also use mean width and mean height. तो मतलब minimum उतना होना पड़ेगा और if it is larger then it will expand itself like this. So we can also use mean width and mean height. So I just change it to mean width and mean height. So whatever it is. Now let us use the font size property. तो basically हम लोग font size को pixel में specify कर सकते हैं. By default इसका value होता है 16 pixels. Okay. So basically I zoomed in too much, इसलिए बहुत बड़ा लग रहा था. Actually this is the real size. Huh? This is the 100% size. This is the real size. Let me still zoom in. Just you have to understand the concept, which is more important. So if I increase the value more than 16 pixel, you will see that the values, the font size, मतलब बड़ा हो जाता है font size, right? ठीक है? Now inside this we have a p tag. Okay, we have some p tag. Okay, तो इसमें मैं dummy text लिख देता हूँ. By typing lorem in VS Code, हम लोग को dummy text मिल जाता है. I'll explain you what this does. Like more on VS Code हम लोग का वैसे भी class रहेगा. So here I am adding a class. I will say description. Suppose, this is description, and this is say main container या फिर main card maybe main card. ID दिया मैंने main card. I'll also have to change here main hyphen card, or either I'll give dot description like this. Description. So here what I will do, इधर भी मैं एक font size दूंगा. ठीक है. Here I will give font size say 15 pixels. So description का font size थोड़ा छोटा होना चाहिए हम लोग का parent से. And then buttons font size maybe
इसका हम लोग देंगे कार्ड बीटीएन, सपोज क्लास कार्ड हाइफन बीटीएन। बेसिकली इसको केबाब केस बोलते हैं, दोस नेम्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय हाइफेंस दे आर कॉल्ड केबाब केस। सो कार्ड हाइफन बीटीएन लाइक दिस। तो इसमें हम लोग देंगे फोन साइज में भी ये 19 है ना, ये होगा 17 पिक्सल सपोज। सो इट्स स्लाइटली स्मॉलर देन दिस वन। इसको सबसे बड़ा कर देते हैं 23 पिक्सल। सो दिस इज द लार्जेस्ट। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी देयर इज नो प्रॉब्लम राइट नाउ, राइट, इट्स वर्किंग। तो ऐसा हम लोग का बहुत सारा कार्ड रह सकता है। बेसिकली फोन साइज का ऐसा हम लोग का हायरार्की रह सकता है। पहले एक एलिमेंट रहेगा सबसे बड़ा, फिर इसके अंदर का कार्ड में थोड़ा सब हेडिंग जैसा छोटा रहेगा, देन इसका बटन का में भी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका से 16 पिक्सल रहेगा डिफॉल्ट टेक्स्ट, या फिर इसको 14 कर देते हैं, तो बटन का सपोज 14 रहेगा। सो नाउ व्हाट इफ यू वांट टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ ईच ऑफ देम, सबका फॉन्ट साइज को मतलब मे बी थोड़ा थोड़ा कमाना है। In those cases this is useful, huh? This em unit, okay, em unit, so it's a relative unit. It's exclusively mostly used in font sizes basically, हाँ, अलग में भी यूज कर सकते हो, in width and height also you can use, but it's not at all recommended. It's only to be used for font sizes. So when you use em, responsive हो जाता है। Let me show you, हाँ, पेरेंट का font size को हम लोग पिक्सल में दे सकते हैं। Yes, you can specify the value of the parent's font size in pixels. Yeah, question সুধিব পাৰা। কিন্তু কি আমি হেৰিৰ লগত ইউজ কৰিব লাগিব, মিডিয়া কোৱালিটিৰ লগত ইউজ কৰিব লাগিব নেকি? নহয় নহয়, নাথিং লাইক দেট, নাথিং লাইক দেট। মিডিয়া কোৱালিটিৰ লগত ইউজ কৰিব নালাগে। ৰেছপন্সিভ মানে অলৱেজ সেইটো নহয় যে তোমাৰ স্ক্ৰীন চাইজ কমালে, অলৱেজ নট দেট দ্য কেছ। ৰেছপন্সিভ মানে তোমাৰ পেৰেণ্টৰ কিবা চাইজ চেঞ্জ হ'লে চাইল্ডৰ চাইজটো তোমাৰ এডজাষ্ট হৈ যায় অট'মেটিক। তো সেইটো চেঞ্চতো অলপ পোৱা যায় ৰেছপন্সিভ মিনিংটো। অ'কে, তো তাতে ইউজ কৰিব নালাগে, নট এক্সেক্টলি। কৰিব পাৰা ফৰ ফোনছ, ইউ কেন ইউজ স্মলাৰ ফোন চাইজ, হা, কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেল কনচেপ্টটো মই কৈ আছোঁ এতিয়া। সাপোজ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ আই ৱান্ট টু ৰিডিউচ, চবৰে মানে ফোন साइज অলপ অলপ কমাব লাগে এতিয়া, হা। सपोज थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसा बड़ा हो गया, सबका फोन साइज को थोड़ा थोड़ा कमाना है। द सॉल्यूशन इज नॉट टू जूम इन एंड जूम आउट, ये तो यूजर का चीज हो गया। तो ओवरऑल फोन साइज को कमाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मे बी इसको कमाना पड़ेगा 20 पिक्सल, फिर इसको भी टच करना पड़ेगा 13 पिक्सल, सपोज सबका 2 पिक्सल कमा दिया, मे बी इसको 12 पिक्सल। सो इट्स, देखो अभी सबका छोटा हो गया, बट लुक हाउ मेनी वैल्यूज आई हैड टू चेंज। मुझे इसको भी पेरेंट को भी चेंज करना पड़ा ऑफ कोर्स, लेकिन चाइल्ड को भी हर एक मुझे टच करना पड़ा। बट इफ आई यूज REM, नॉट REM, सॉरी EM, if I use EM, this is not the case, huh? So EM is used in case of font sizes. If I write 1 EM, इसका मतलब समझाएगा पेरेंट का जितना भी फॉन्ट साइज है ना, इसका पेरेंट, ओके, दिस इज आवर चाइल्ड एलिमेंट डिस्क्रिप्शन, तो इसका पेरेंट जो भी है, whichever parent it is, maybe this card or even if it is body, okay, does not matter, whichever parent it is, उसका सेम साइज लेगा, हाँ, if you give 1 EM। 1 EM मतलब 100%, जस्ट लाइक परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग जब देते हैं 100% मतलब पेरेंट का जितना भी डिमेंशन है, सपोज विथ है 170 पिक्सल्स, इफ आई गिव विथ 100 पिक्सल, तो पेरेंट का जितना भी विथ है 100% ले लेगा, 50% मतलब हाफ लेगा, जस्ट लाइक दिस। हियर यू हैव टू राइट 1 EM, 1 EM मीन्स 100% फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट, ओके। सिमिलरली इफ आई राइट ऑल्सो हियर 1 EM, मतलब 100% पेरेंट का है, फॉन्ट साइज ले लेगा। सो इफ आई रिलोड दिस, देखो इसका साइज अभी पेरेंट के साथ सेम सेम हो गया। देखो हम लोग का पी टैग डिस्क्रिप्शन का फोन साइज 20 पिक्सल से सेम हो गया, बिकॉज इट्स पेरेंट इज दिस वन, मेन कार्ड, और मेन कार्ड का फोन साइज कितना है 20 पिक्सल, ठीक है। इसमें भी हम लोग ने 1 EM दिया है बटन में, सो 20 पिक्सल हो गया। नाउ आई कैन गिव स्मॉलर देन 1 EM, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट सेम एज द पेरेंट साइज, आई वांट स्मॉलर देन पेरेंट। सपोज आई वांट 70% ऑफ द पेरेंट फोन साइज, आई विल सिंपली गिव 0.7 EM, सिंपल 0.7 EM, और बटन को मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ 0.6 EM, ठीक है, like this. Don't put spaces, okay, just like pixel में हम लोग spaces नहीं देते हैं ना, here also same. So now 0.6% of 60% of parent font size, and this one is 70% of font parent size. Now when I reload, देखो छोटा हो गया अभी, हाँ छोटा हो गया, अभी छोटा हो गया। Now when I increase this font size or decrease the font size, you will find that the child will automatically adjust itself. अभी मैं parent का font size को 25 पिक्सल कर दिया, as soon as I do this, child का font size automatic adjust हो जाएगा। Look, child भी हम लोग का बड़ा हो गया, because child is always the 70% font size of the 25 pixels, and this is 60% of 25 pixel. So now does not matter whether I make 35 pixels, whether I make 15 pixel. Now the font size value is locked in. Okay, it is locked in now according to the parent font size. Okay, so this is the main benefit of using
EM. Okay, EM. So this is a responsive unit. It's responsive because it's changing based on parent. That's what responsive means. Based on the parent window size or based on the parent element, the values are changing. So that's what responsive means. So it's a responsive unit. हाँ. तो ये parent से लेगा. तो now you might ask, what if I give, what if there is no font size? What if there is no font size? तो क्या होगा? Default ले लेगा. As you know, default font size कितना होता है? 16 होता है. So by default इसका font size 16 pixel ले लेगा. If I don't give anything, it means by default 16 pixel है. So 0.7 of 16 pixels and this one is 0.6 of 16 pixels. ठीक है? Like that. So what if you give directly here in EM? What will happen? If I give one EM here, so same formula. Okay. Even if you can nest this like this. हाँ? In parent also you can give font size in EM. इसमें EM देने से क्या होगा? इसका parent कौन है? इसका parent है body. Very simple. इसका पेरेंट है बॉडी. सो बॉडी का फॉन्ट साइज कितना होता है? 16 ही होता है. बाय डिफॉल्ट सब एलिमेंट का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल होता है. हाँ, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल लाइक दिस. So you can imagine this font size is present in the body. If I give or don't give, it will still be the same. ठीक है, like this. So this is 1 EM, मतलब पेरेंट का ये 16 पिक्सल ले लेगा और इसका जो चाइल्ड है ये पेरेंट से फिर से मतलब कैलकुलेट होके ये होगा. ठीक है. I can also make it larger than 1. I can write 1.3. I can write 2. I can write 3. तो पेरेंट का फोन साइज चेंज होने से चाइल्ड का भी ऑटो एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है. सो इट कैन गो डीपर एंड डीपर. यू कैन कीप ऑन नेस्टिंग. हाँ, एक चाइल्ड के अंदर चाइल्ड ऐसा भी हो सकता है. सो वट एवर इट इज, पेरेंट का फोन साइज से कैलकुलेशन होगा. दिस इज फोन साइज इन EM. सो एनी कंफ्यूजन हियर? फोन साइज इन EM, दिस वन. Any confusion, Prashant? Vidya বুঝি পাইছা font size this one EM? বুঝি পাইছো মই. just like percentage, but in the case of font size, that's it. Font size मतलब pixel to fixed unit, but EM is a dynamic, what is a relative unit, fluid unit. तो parent से लेता है value, but pixel is a solid fixed unit. अगर मैं description में pixel में देता हूँ ना 15 pixel, इसका मतलब इसका font size हमेशा 15 पिक्सल ही रहेगा. इट विल नेवर चेंज. इट विल ओनली एंड ओनली बी 15 पिक्सल. नाउ यू कैन सी इसका एग्जैक्टली 15 पिक्सल होगा. नो मैटर मैं इसका पेरेंट का साइज 3 EM करता हूँ. नो मैटर मैं पेरेंट का साइज इफ आई मेक इट 30 पिक्सल 20 पिक्सल, डज नॉट मैटर. It will always stay 15 pixel. But if I add 0.7 or 0.8 EM or even 1.3 EM larger than the parent, then based on the parent size, this will auto adjust. That's the difference. Huh? Vipul, did you get this? Sorry, man, I had a call, but although I understood that there's not a static Okay, part, okay, okay. and like, yeah, but then Yeah, no problem. I recommend watching the video. Video I may available कर दूंगा because I think okay, sure. yeah, it is not that hard. It's just like pixels. What is say percentages? प्रशांत को समझ में आया? Okay, प्रशांत का? so you're using pixels to specify some certain sizes, right? Like the borders and paddings of the thing. No, that was different. That was different. That was Hello? different. Yeah, Okay, so after that, okay, what I'm saying, we are talking about this unit, huh? EM. We are okay. talking about this unit. EM and R, REM is not required now. You can ignore this. okay, So yeah, what okay, EM does, when I say one EM, it will take the parent's font size. Okay, parent का जितना भी font size है 20 okay, pixel. 1 EM means 20 pixel, not okay, 20 pixel. 1 EM means okay, the whatever font size the parent has, उसका exactly same होगा. okay, 100% of the parent font size. If parent font size is 25 okay, pixel, then its 1 EM will also mean 25 pixel. Look, description okay, is the child. This is the child element, and this is our parent element. okay, So main card, this okay, one ID main card, इसमें मैंने 25 पिक्सल दिया. तो as soon as I give in okay, this one of his child element में 1 EM देने से समझाएगा पेरेंट का जितना भी फॉन्ट साइज है वो फुल्ली समझाएगा, which means 25 पिक्सल. So you can see इसका और इसका चाइल्ड का, this is child element. Okay, and this text, ये can you जो come text है, again, like हाँ the 1 EM bit? I, ये text parent का है because this is directly inside parent element, but this is inside some child okay, element. Okay, so parent का okay, font yeah, size 25 पिक्सल, but child का अंदर का font size 1 EM दिया है. 1 EM also means
Okay. parent का ही समझाया. Now if I give 0.7 em, it means 70% of the parent's font size. Okay, Okay. so it will become smaller than parent now. That's what I mean, Okay. like this. Okay. So now if I change the So parent's font what does size, 1 EM, what does 1 do? 1 means 100%. Okay. जैसे हम लोग ने परसेंट यूज किया था ना, विथ सपोज 100, Yes. विथ 170 पिक्सल पेरेंट का. चाइल्ड में अगर मैं दूंगा विथ Okay. 100%, इट मीन्स द विथ ऑफ द पेरेंट Okay. इटसेल्फ फुल विथ. इफ आई गेट 50% Yes. विथ, तो पेरेंट का हाफ. जस्ट लाइक दिस. Okay. इट इज सेम थिंग, Yeah. जस्ट इन केस ऑफ फॉन्ट साइज, पेरेंट का जितना भी फॉन्ट साइज है पिक्सल्स में, 25 पिक्सल, Yeah. 30 पिक्सल. सो इन चाइल्ड एलिमेंट Okay. यू हैव टू स्पेसिफाई इन em. ओके, em. Okay. हाँ. If I give 1 em, it means 100%. You don't write 100 em here. In this case, you write 1. Okay. 1 means 100%. Okay. 0.7 means Okay. 70% of the So, parent's so font you are size. using some logarithmic Not notation at all kind of. logarithmic. Not Okay. logarithmic. You can say percentage. Like it's a percent value. It's a Percent fractional value. part. Look, 1 means 100% of 25 pixels. Okay. 0.5 means 50% of 25 pixels. So Okay. nothing logarithmic, just Okay. percentages. Okay. If it is larger than 1, 1.3, then it will be larger than the parent's font size. That's what it means. द बेनिफिट इज, देखो इसका अंदर का चाइल्ड एलिमेंट में मैं जहां जहां मैं em में डालूंगा ना वैल्यूज को, whenever I change this parents value, child का वैल्यू ऑटो एडजस्ट हो जाएगा. इफ आई इंक्रीज द पेरेंट्स फॉन्ट साइज, द चाइल्ड्स फॉन्ट साइज विल आल्सो एडजस्ट इटसेल्फ. ठीक है. इफ द चाइल्ड वाज सपोज टू हैव 50% font size of the parent, then it will always stay the 50% font size. हाँ हाँ. दे. Percent use করলে শুন same হবো নহব জানো? পার্সেন্টটো তোমাৰ আই থিংক উইথৰ পৰা ল'ব নেকি, ৰবা. I think person also has similar behavior. हाँ हाँ, person भी same behavior ले रहा है. But EM or slight এটা difference আছে হা. এইটো EM and REM, এইটো basically font size use কৰিব লাগে. So percent use কৰিলে চাগে issues পাবা তুমি ক'বাত ফিচাৰত. But still I'll try to find this difference হা. Basically EM তে কৰে হা তোমাৰ font size টো percentত নিদিয়ে. So there must be solid reason for that. Because percentৰ তোমাৰ issues আহিব পাৰে. মানে কি কয়, there may be some ambiguity. I think is it like font size because of that? Because if your font is in a percentage based on your element, Huh. which is whichever block or inline. No, no, it's nothing like that. It's nothing like that. Yes, percentage is also working fine, but we still let me Google once, okay? So percentages versus EM. There is a difference. That's why it exists. The formula EM's percent is conversion this, or maybe it's just another way of writing. But in font sizes, EM को हम लोग use करते हैं. We have never used percentage, but still I think it will have the same behavior. Seems to. Yeah, yeah, yeah. Look, someone already asked, huh? Font size in CSS, percent or EM. I will just post this link. Same question which Riday has asked. Someone has also asked in Stack Overflow. Let me just put it. There is really a good article someone pointed out. इसको पढ़ लेना हाँ. You can check this out, Riday. মই এটা লিংক পঠাইছো, ঠিক আছে? Okay. এইটো পঢ়ি ল'বা তুমি. What is the difference between EM and this? কিন্তু আমি basically EM টো use কৰো. Font size বুলি ক'লে মানে EM ত লিখা যায় আৰু. ঠিক আছে? So I will rather prefer to write EM, 0.6 EM, 1.3 EM like this. But if it works the same, you can also hold this, but in the web development industry, be prepared because you will see this syntax a lot. ठीक है? Font size to EM देखा पाबा mostly. So be aware. ठीक है? अभी रैम को मैं बोल देता हूँ. हाँ, रैम को शॉर्टली बोल देता हूँ. बाद में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. तो रैम व्हाट इट डस. Hello. हाँ, या So 1 EM is like 100% of the या parents 100% of the parents thing, font right? size. Parents font size. Okay. That's it. So as soon So as if the parent is a viewport, then it's like the screen thing, is it?
And I'm still confused in this part that viewport is the laptop screen or is it my phone viewport or it's very dynamic, like, based on device the viewport changes. Viewport is your this one browser window. This one browser window Okay, so render if I'm this using part. that in my phone, then it would be smaller over like Yeah, if percentage. in phone you cannot adjust the browser size. If you could, then Okay, viewport will be smaller. So this is the viewport, the place where it is rendering the content, the okay, place where you can view the website. Okay, the port where okay, you can view the website, viewport. okay, Yeah. So as you can see in okay. between these windows, so this windows width is our viewport width. So here in this case, it is the body as well, right? Same thing. Yeah, if body's width is 100%, then yeah, it's the same thing. Okay, okay, Font size you can add in percentage. Just use EM. Okay. So the benefit of EM, as soon as you change parents size, इसका child का size भी auto adjust हो जाएगा. That's the difference. So but if the problem is if you use pixels in child, so अगर मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में पिक्सल में यूज किया होता 15 पिक्सल्स, तो इसका विथ हमेशा 15 पिक्सल रहेगा. अगर मैं पेरेंट को बढ़ा देता हूँ तो ये पेरेंट से बड़ा नहीं होगा. ओके, इट विल नॉट एडजस्ट इटसेल्फ विद द पेरेंट अकॉर्डिंगली. ये हमेशा 15 पिक्सल होके रह जाएगा. If I wanted to increase the overall entire size of the child elements font size, then this will not work if you don't add the value in percentage or EM. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू था REM एक्चुअली. तो REM का क्या होता है? REM इज द ब्राउजर सेटिंग फॉन्ट साइज. ठीक है. ब्राउजर सेटिंग में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 16 पिक्सल्स. ठीक है. 16 पिक्सल्स. सो 1 REM is 16 पिक्सल्स. ठीक है. 1 REM equals to 16 पिक्सल्स. So if I add 1 REM, oh, ये hello, what 16. what were you हाँ. saying? The browser setting thing? Yeah, the whatever font size is there in your browser setting. Okay, browser Okay, setting or whichever setting of font size, maybe in your fonts device setting, whatever font size you've adjusted, that is equal to 1 REM. okay, okay, If the default setting is set to 16 pixel, which happens to be the case in browser, then 1 REM equals to 16 pixel. So I can go to browser okay, setting, right? I can go to browser setting and change the font size somewhere. okay. Some noise is coming, yeah. So customize fonts here. You can adjust. Look, 16 pixel. You can see इसमें ब्राउजर का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल करके रखा है. यू कैन एडजस्ट दिस. ठीक है. दिस वन. तो व्हेनेवर आई एडजस्ट दिस 1 आरईएम जो वैल्यू है ना, दिस आरईएम वैल्यू अगर मैं वैल्यू को आरईएम में डालूंगा ना, हाँ इसमें बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो गया है. दिस वन यू कैन सी फॉन्ट साइज. सो आरईएम इज आल्सो सिमिलर. तो REM 1 REM equals to 16 pixel or whatever browser font size is being adjusted has been adjusted. If it is 16 pixel 17 pixel does not matter. Whatever value is there in your browser setting, तो वो equals to 1 REM होगा. ठीक है. मतलब 2 REM मतलब कितना होगा? 32 pixels. Okay, that's it. REM is also just like pixels. It's a fixed unit. It's not a relative unit like EM. EM is a relative unit. EM what it does, parent का जितना font size है उससे compare करके calculate होता है. But 1 REM it is equal to the browser font size setting whichever has been set here. ठीक है. Just like pixels. Just like 1 pixel कितना होता है? 1 pixel is a dot on the screen. So 1 REM is the adjustment or the setting that has been set on the browser. Basically it's 16 pixel in most browsers by default. ठीक है. So that's equal to 1 REM. So I can make it 1.5 REM, 1.3 REM. So you can also use REM unit instead of writing 16 pixel, 32 pixel. इसके जगह 1 REM, 2 REM ऐसा भी लिख सकते हो. ठीक है. That's the difference. तो रितेश बुझी पाइছা নেকি this one REM? Oh, Pastor. This is very simple. REM is a fixed unit by the way. REM is a fixed unit. मतलब पेरेंट का जो जब चेंज होगा ये चेंज नहीं होगा. It is no relation with parent. But EM is a fluid unit, fluid or relative unit. It's related to the parent. ठीक है. 1 REM is equal to whatever size that is set on the browser. That's it. Huh? So 1 EM is equal to parent's font size. Default font size is 16 pixel. तो ऐसा होता है. मतलब पिक्सल देने से हमेशा फिक्स रहता है विथ. बट इफ यू गिव इन EM डायनेमिक हो जाता है चीजों को. हाँ. तो EM इज वेरी यूजफुल.
वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, फोन साइज देने में हमेशा चिल्ड्रन में EM में देना, whenever giving font size for parent pixels में देना, हाँ, very important. Okay, so tip, when using font sizes, font size property, always use EM for children unless it's a rare scenario, हाँ. अगर कोई rare scenario है कि child element में exactly 10 पिक्सल ही होना चाहिए font size, no matter what the case is, किसी एक child element में, then you can use pixels no matter what. But in most of the cases, 95 or 97% of the cases, we have to use EM for children and pixel for parent. For 95% of the cases. ठीक है, तो this was the thing. फोन फैमिली हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे. फोन फैमिली, ठीक है, that's enough for today. I will make the video available. Sorry, you can check out the video if you find any confusion. ठीक है, this was mostly conceptual, हाँ, कि बॉक्स साइजिंग देने से क्या होता है, we have already discussed. बॉक्स साइजिंग देने से पैडिंग एंड बॉर्डर टोटल विथ एंड हाइट में इंक्लूड होगा, सो देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन और एम्बिग्विटी. पहले क्या होता था, इनपुट एलिमेंट में पैडिंग देने से फॉर्म से बाहर आ जाता था, राइट? दिस वाज द इशू वी वर फेसिंग. सो नाउ दिस विल नॉट कम एनीमोर. सिंपली व्हाट यू कैन डू, if we want to add box sizing border box for all elements, simply use like this universal selector. Okay, universal selector में simply क्या करना है तुम लोग को, box sizing border hyphen box, simply write like this. So when you write like this, box sizing border box using universal selector, सब elements में box sizing border box apply हो जाएगा. This technique is commonly used. Okay, this technique is commonly or widely used. तो हम लोग box sizing को border box करके रख देते हैं, so that there is no confusion, there is no ambiguity. This is universal selector. Star means universal selector. It is applied to all the elements. People, did you understand this one? Box sizing, what I just said? Okay, read these properties, हाँ, properties को read करना. विपुल का नेटवर्क भी खराब है. ठीक है सर, प्रशांत देख लेना प्रॉपर्टीज को, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना. आई थिंक आई विल बी ओनली अवेलेबल ऑन मंडे, तो तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करो. मैं प्रैक्टिस मटेरियल दे दूंगा बिकॉज माय कनेक्शन विल नॉट बी गुड, इसलिए आई विल बी इन विलेज प्रोबेबली. स्टिल नॉट कंफर्म, Okay, बट bro. हाँ हाँ. I gotta go to. ओके ओके ओके, ठीक है, गुड नाइट देन, आज के लिए हो गया है. Good night. हाँ Thank हाँ, you. ओके, यू आर वेलकम. ওকে, ৰিদেশ চাই ল'বা প্ৰপাৰ্টিজবিলাক, কনফিউজন হ'লে সুধিব পাৰিবা বা বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰাও চাব পাৰিবা. এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰপাৰ্টিজ, হা. বুজি পাইছো হা, মই, বাকী সেইটো মই একচুৱেলি কিবা CSS selectors তো মানে কিবা সিলেক্টৰ্ছ. হৈছে হা অ', হা অলপ হা.